Welcome back to all of you, the students of class 9. This is Karnesh Misra from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Students, in first, second, and third sections of the chapter, the French Revolutions, we have studied about that what was the rumor spread over there in France and how and in how many parts or sections the French society was divided during the late 18th century. We have also discussed and clear our concept about a growing middle class initiates and into the privilege and outbreak of the revolutions. Kranti ki शुरुआत we have studied. After that, we have studied that how France becomes a constitutional monarchy into the privilege and traditional monarchy. In third sections, we have studied about the abolition of monarchy and France becomes a republic. Now we are going to discuss about the reason of terror. So let's study in a detail. Dear students, the reason of terror. The period from 1793 to 1794 is known as, in the history of French revolutions, the reason of terror. 1793 से लेकर 1794 का जो समय है, इसे आतंक का समय, आतंक का युग जो है फ्रांस की क्रांति के इतिहास में जो है कहा जाता है. Why this period in between or from 1793 to 1794 is known as the reason of terror. So the period from 1793 to 1794 is referred to as the reason of terror because Robespierre, who was the supporter of democracy and believes in equality, follow the policy of severe control and punishment. रॉबस्पायर ने जो है नियंत्रण की और समता की सख्त नीतियों को जो है का अनुसरण किया. All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles, clergy, members of other political parties, even the member of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. That means he was the strict follower of democracy and whom he got or he saw as the enemies of the republic. तो लोकतंत्र के जो भी या गणतंत्र के जिनको शत्रु जो है देखता, वो चाहे आपके कुलीन वर्ग के हों, नोबेल हों, क्लेरजी, पादरी हों और अन्य राजनीतिक दल के कोई सदस्य ही क्यों न हों, खुद के उसी के जो है पार्टी के वे लोग जो उसकी बातों से जो है या उसके निर्णय से जो सहमत न हो, उन्हें गिरफ्तार करवा लेता. दे वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन, कैद में डाल दिया जाता एंड देन ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. उसके बाद उनके ऊपर जो क्रांतिकारी कार्रवाइयाँ की जाती एंड इफ व्हेन दे फाउंड गिल्टी, और जब उनको दोषी पाया जाता, दे वर गुलोटाइन्ड. तो उनको गुलोटाइन इज अ डिवाइस या एक मशीन है, दो तारे से बीच में जो है लटकती हुई जिसमें आरा लगा होता है, उस पर अपराधी के जो है सिर को जो है रख कर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता है. एंड दिस डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय द डॉक्टर गुलोटाइन. सो इट वॉज नेम्ड आफ्टर हिज नेम. उनके नाम पर ही इसका जो है नाम पड़ा, द गुलोटाइन. सो द पीपल्स हु डिड एनी हेजिटेशंस विद द डिसीजन ऑफ द रॉबस्पायर और enemies of the republic, maybe noble, clergy, members of the other political parties and the peoples from
the members of Rospire Club who are not agree with him. They were arrested, they were imprisoned, and later then tried by the Revolutionary Tribunal. When they found guilty, they were guillotined. So guillotine is a device consists of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine, who invented it. So the reason from 1793 to 1794 is known as the reason of terror, because the Robespierre, follower of the Republican thoughts, followed a policy of severe control and punishment. रॉस्पायर ने जो है नियंत्रण की और दंड की सख्त नीति अपनाई. सो व्हाट वेयर द हिज पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. सो ऑल दोज हुम ही सॉ बीइंग एनिमीज, जिनको भी वो रिपब्लिक का शत्रु पाता देखता ऑफ द रिपब्लिक, चाहे वो नोबेल ही क्यों न हो, नॉट ओनली नोबेल्स, क्लैरिजी, but also the members of the other political parties, and further added even members of his own party who did not agree with his methods or with his decisions were arrested, were imprisoned and tried by the Revolutionary Tribunal. If the court found them guilty, if by the court those peoples whom Robespierre saw enemies of republic found guilty, they were guillotined. So the guillotine is a, what is guillotine? Guillotine is a device consisting of two poles. ये एक तरह का जो है मशीन है, दोनों तरफ जो है पोल लगा रहता है, खंबे लगे रहते हैं, बीच में एक बड़ा सा जो है तार रहता है, उस पर आरा लगा रहता है मशीन, और जो अपराधी पाया जाता है उसके सिर को उसी पर रख के धड़ से अलग कर दिया जाता है. सो द डिवाइस कंसिस्टेड ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज beheaded. इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलियोटाइन हु इन्वेंटेड इट. डॉक्टर गुलियोटाइन जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? गुलियोटाइन डिवाइस. Over which the persons who are found guilty beheaded, यानी कि जिनको दोषी पाया जाता था उनके सिर को जो है आरे पे जो है धड़ से अलग कर दिया जाता था गुलियोटाइन की जो मशीन थी उससे. So the Robespierre government issue a law placing maximum ceiling on wages and prices. तो Robespierre की जो सरकार ने क्या किया, उसने जो है वस्तु की जो विक्रय था और उसकी जो है मजदूरी और कीमत, इस सब को जो है निश्चित कर दिया. मीट एंड ब्रेड वेयर राशंस, गोश्त और ब्रेड की जो है राशनिंग कर दी गई. पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. That means the peasants peoples are forced to buy their grains to the markets at the price fixed by the government. सरकार के द्वारा जो निश्चित मूल्य था उस पर जो है किसानों को जो है अपनी उपज के जो है अनाजों को जो है बाहर बेचने के लिए जो है बाध्य किया गया. The use of more expensive white flour was forbidden. और महंगे सफ़ेद जो है आटे के जो प्रयोग पर रोक लगा दिया गया. All citizens were required to eat the pain de-eglite, that means equality weight. देश के सभी लोगों को जो है समता का प्रतीक जो है भोजन, the loaf of made of whole wheat, कड़े जो है गेहूं की जो है बने हुए जो रोटियों को जो है
खाना अनिवार्य कर दिया गया। एंड एड्रेसेस इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मोन्सियर्स, और लोगों की आम बोलचाल की भाषा में भी समता लाने का प्रयास किया गया। तो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोन्सियर सर और मैडम, सर और मैडम, महाशय और महाशया की जगह ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन्स वेयर हैंसफोर्थ सितोयन एंड सितोइनी। सो जो भी फ्रेंच मैन एंड वुमेन थे उनको महाशय और महाशया, सर और मैडम की जगह पे now from now they were called citoyen and citoyen. So churches were shut down, चर्चों को बंद कर दिया गया, and their buildings converted into barracks or offices, और उनके जो है भवनों को जो है छोटी छोटी जो छावनी और जो है दफ्तरों में तब्दील किया गया। Robespierre pursued his policy so relentlessly, रॉबस्पायर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से, इतनी कड़ी सख्ती से जो है लागू किया that even his supporters began to demand moderations, कि उसके जो समर्थक थे वो भी जो है त्राही त्राही करने लगे। Finally he was convinced by a court in July, finally in the year 1794 he was convicted by a court. What was the year? 1794 he was convicted by a court, कोर्ट के द्वारा वो जो है दोषी माना गया, दोषी पाया गया, एंड अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटाइन, और अगले दिन उसको भी जो है गुलेटाइन पर जो चढ़ा दिया गया, अर्थात गुलेटाइन जो कि दो खंभों से जो है लगा हुआ, बीच में एक तार आरे की मशीन है जिस पर अपराधी के सिर को जो है रख के धड़ से अलग किया जाता है। सो ही वॉज गुलेटाइन्स in the year 1794 when he found guilty, or he was convicted by a court in the year 1794. So due to this, the reasons from 1793 to 1794 is known as the reason of terror in the history of France. तो फ्रांस के जो इतिहास में जो है ये 1793 से लेकर 1794 की जो समय है, जो अवधि है, इसको जो आतंक का युग और समय कहा जाता है, बिकॉज इट वॉज द रीजन्स ऑफ रॉबस्पायर। रॉबस्पायर का जो है ये समय था, काल था, जब लोगों को उसके नियमों को, उसके तौर तरीकों को जो है बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ता था। So this period from 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror, because Robespierre followed a policy of several control and punishment. All those whom he saw as being enemies of republics, example nobles, clergy, members of other political parties, even the members of his own party who did not agree with his methods, with his decisions, with his thoughts, were arrested, imprisoned, then tried. They were tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotines. The guillotine is a device methods of two poles and blades with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine, who invented it. Robespierre government issues laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Robespierre की जो सरकार ने जो है वस्तुओं के जो है क्रय और उसके जो है मजदूरी की कीमत को निश्चित कर दिया। मीट एंड ब्रेड्स वेयर राशंस, गोश्त और ब्रेड की राशनिंग कर दी गई। पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज, किसानों को जो है अपने अनाज को जो है शहरों में जो है जाकर सरकार द्वारा निश्चित दाम पर बेचने के लिए बाध्य किया। सो द पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड to transport their grain to the cities and sell it at the prices fixed by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. White flour
जो कि बहुत महंगा था, इसके प्रयोग पर जो है बंधन लगा दिया गया, फॉरबिडेन। ऑल सिटीजन वे रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिलाइट इक्वलिटी ब्रेड अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। देश के सभी जो है नागरिकों को जो है समता का जो है प्रतीक खड़े गेहूं का जो है आटे का जो है रोटी जो है खाने के का अनिवार्य कर दिया गया। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म्स ऑफ स्पीच, और समता को जो है लोगों की बोलचाल की जो भाषा में लाने का प्रयास किया। दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ सर एंड मैडम्स द पीपल यूज टू कॉल्स मेन एंड वुमेन्स विद द वर्ड सितोयन एंड सितोयनी। लोगों को जो सितोयन और सितोयनी, सितोयन इज अ वर्ड यूज फॉर द मेल एंड सितोयनी इज यूज फॉर द वुमेन। सो चर्चेज वेयर शट डाउन, चर्चों को बंद कर दिया गया। एंड द एक्सेस लैंड वेयर टेकन, जो अधिक उनके पास भूमि थी वो ले लिया गया। एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज, और उनके भवनों को जो है छावनियों में और दफ्तरों में तब्दील कर दिया गया। सो रॉबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटेसली, रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगन टू डिमांड मॉडरेशंस, कि उसके जो समर्थक थे वो भी त्राही त्राही करने लगे, परेशान हो गए। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट, अंततः 1794 को उसे कोर्ट द्वारा जो है दोषी पाया गया। एंड ही वॉज ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही वॉज गिलोटाइन, और उसे जो है गिलोटाइन पे जो है क्या किया गया, चढ़ा दिया गया। ओके, more we will discuss in the next video. Thank you for listening me. Have a great day. Take care of your health and continue your study. Do all the questions and answers which are frequently asked in your examination. So prepare yourself from the examination point of view so that you can be able to attend all the questions being asked from any corner of the chapters. Okay, that's all. Thank you for listening me once again.